इंटरव्यू दिया था मैंने एंड दे आस्क्ड मी डीएसए इन पाइथन। हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट coding if you are in your first year of college or even if in your second year and you have not started. So how to do it for cracking placements, for cracking internships, and trust me, starting and doing coding and continuing it as a part of your daily routine is not a very tough job. अब यू विल से कि भैया आई एम इन अ कॉलेज जहाँ 9 to 6 क्लासेस होती हैं एंड उसके बाद आई डोंट हैव मच टाइम, तो दिस इज़ एन एक्सक्यूज़। कॉलेज में टाइम हमेशा होता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। यूटिलाइज करने पे डिपेंड करता है कि हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। तो 1 घंटा तो निकालो, डेली कोडिंग करोगे, बट बिफोर स्टार्टिंग टू कोड जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज पॉइंट्स में मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, बट इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनना। मेरे कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस होंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि किस कोडिंग लैंग्वेज में कब डीएसए पूछ सकते हैं, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज करनी चाहिए, कौन सी आईडी करनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं वाइल स्टार्टिंग कोडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। से पहले क्वेश्चन आता है, भैया विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड वी चूज। सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले इट्स कि what companies do really ask in your tech placement. So companies mostly focus on data structures and algorithms. And if we talk about data structures and algorithms, then the most commonly used language is C++ and Java because they are faster. Now you'll say कि भैया पाइथन भी तो है, एंड आज के ज़माने में यू मस्ट हैव हर्ड एवरीवेयर कि लोग पाइथन यूज़ करते हैं कंपनी में जाके। सी कंपनी में जाके व्हाट डू यू यूज़ इज़ अ डिफरेंट टास्क। वो तुम्हारा क्या टास्क रहता है, व्हाट यू आर बिल्डिंग, उसका क्या टेक स्टैक होता है, उस पर डिपेंड करता है। बट मोस्टली if you go on YouTube, the content that is available is related to C++ and Java, and companies भी इस पे ही ask करती हैं क्योंकि C++ and Java are quite tougher than Python. So either you choose C++ or you choose Java. I choose C++. मोस्टली लोग C++ चूज़ करते हैं। There are quite a few people जिनके यहाँ जावा उन्हें 9th-10th में पढ़ाई जाती है ICSE बोर्ड में, so they might continue with Java. But either of these two, don't choose Python until you are in college. You should have a knowledge of your Python, क्योंकि एक बार मेरे ML एक इंटरव्यू दिया था मैंने एंड दे आस्क्ड मी डीएसए इन पाइथन। तो अब तुम कहोगे कि भैया पाइथन भी पढ़नी चाहिए। पाइथन को साइड बाय साइड यू कैन नो अबाउट इट, सिंटैक्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, बट एक बार इफ यू आर रेडी टू बिल्ड योर लॉजिक इन, लेट्स से यू आर बिल्डिंग योर लॉजिक इन C++, तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट इन टू द पाइथन इफ यू नो द सिंटैक्स, राइट। सो लीड कोड के जितने क्वेश्चन हैं वो ट्राई टू डू इट इन C++ एंड जावा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, भैया you talked about lead code, but what if we are not yet ready to do questions on lead code and we want to first do coding on our local system, and then we can start practicing questions. First we want to learn about the syntax, learn about the basics of any of these two programming languages. So choose an IDE. It might be an online code editor as well. So there are two famous IDEs. One is IntelliJ and second is Visual Studio. I prefer Visual Studio. उसमें काफ़ी सारे extensions हैं. If you are doing your coding in Java, C++, Python, doesn't matter. You can easily do coding using those extensions in your Visual Studio. So I'd recommend you use Visual Studio. एंड IntelliJ is for those who might do coding in Java. मतलब बाकी लैंग्वेजेस में भी हो जाती है, बट इट इज़ प्रेफर्ड फॉर जावा, वाइल विजुअल स्टूडियो इज प्रेफर्ड फॉर एवरी अदर थिंग। एंड इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन कि आई एम नॉट एबल टू इंस्टॉल इट, या मेरे लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो या IntelliJ सपोर्ट नहीं करता है, सो वेयर शुड आई गो फॉर कोडिंग। So you have a online GDP compiler for every language where you can go and you can code in whatever language we are coding it. So that is for those जिनके लैपटॉप में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी specifications भी नहीं है and they still want to start learning coding, right? So these two main points are covered कि तुमने you have chosen a programming language and then you have chosen an IDE to start to code with. Now how do I learn coding? See, there are many tutorials on YouTube, and trust me, you should not buy a paid course to learn programming.
If you are in a college, definitely you'll have one course either on C++ or DSA or Python as well. So in college, in one semester, they are going to teach you any one of the programming languages. Like हमारे यहाँ क्या हुआ था, in the first semester they taught us Python, in the second semester they taught us data structures and algorithms, and that was in C or C++. Okay, so उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. If you are in college, तो तुम्हें either of एक किसी सेमेस्टर में you will be taught about this. But if we come out about what are the which YouTube channels to follow to learn coding, then there are three very popular YouTube channels. One is your Code with Harry, second is your Apna College by Aman Dhattarwal, and third is your Take You Forward by Striver. So, if you are starting with your basics, then Code with Harry and Apna College are really good channels. I'm not saying कि इन्होंने पूरा content नहीं cover किया. They have covered almost all the advanced content as well. But बेसिक्स के लिए बेटर है. इफ़ यू वांट टू get a level up your coding skills and go for advanced data structures and algorithms like trees, graphs, and your dynamic programming, then hands down there is no better channel than Take You Forward by Striver. And the way playlists are structured there, you won't find them anywhere else, whether it is a paid Udemy course or a paid Coursera course as well. So you can go with these three channels. See, they more options, more confusions. So just stick to these three channels. Any of the three you can choose and proceed forward. ठीक है. अच्छा, don't switch in between the channels. एक बार choose कर लिया, उसको कुछ time तक continue रखना है. अब बात करते हैं कि what are the mistakes that we generally do while we start coding. तो यार सबसे बड़ी mistake होती है जब हम code कर रहे होते हैं, तो we watch the tutorial, we just keep watching the tutorial. We don't code it side by side on our local IDE or online code editor, whatever you are using, and just हम tutorial देखते हैं और हमें लगता है कि we are going to gain all the information. ना हम code करते हैं, ना हम notes बनाते हैं. तो यार if you are watching a tutorial, उसको बीच बीच में pause करके अपने आप भी code लिखो. इससे क्या होता है, practicing code increases the remembrance of the syntax. ठीक है, you at least basics तुम्हारे clear हो जाएंगे, तुम्हें कभी भी syntax के issues नहीं आएंगे. Second biggest mistake is that when you are solving a problem, let's say on lead code or code forces, ठीक है, what or hacker rank is for beginners, you can start with there, or codeship. What you do is that if you have a logic in your mind, then बहुत लोग just go and write their logic in the platform and they submit the code, and then they get an error on any of the test cases that are there. So first of all, whatever logic you are implementing, whatever logic you are thinking, just write it down on paper and write down 3 to 4 test cases that are provided in that the sample test cases. हर question में sample test cases provided होते हैं by that platform, and just practice those sample test cases, practice that logic on those sample test cases. उसके बाद एक खुद का test case बनाओ, give some time to think. Don't rush towards the solution. खुद का एक टेस्ट केस बनाओ, check your logic. If your logic confines with that test case, then you can proceed with your logic, उसको implement करो. अब जहाँ error आता है, उस टेस्ट केस को फिर से लिखो and check करो कि तुम्हारे लॉजिक में कहाँ कमी थी, उसको कैसे enhance करना है. वो enhanced version को again implement and just try solving that. एक टाइम बाद 30-45 minutes के बाद if you don't find a solution, then you can go towards the solution that is provided by that platform or the discussion area where people discuss the solutions. So these three points are the main points while you are starting to code, and these are the mistakes that I have already told कि बहुत होती हैं. So you don't need to worry. Coding is very very easy. You can just follow these points step by step and you can learn to code, and definitely you can crack your internships and placements because they focus on DSA. तो तुम DSA पे focus रखना अपना. If you are in first year, you can focus on competitive coding, and first second year दोनों में you can focus on competitive coding. But once you have finished your second year and you are into the summer break of your second year before the third year starts, then that focus should be on your data structures and algorithms. Always try to utilize the vacations that are provided by the college. उसमें ये नहीं सोचना है कि I'll enjoy. You definitely enjoy. 4 साल you will obviously enjoy, but try to utilize them in your development, in your personal skill development.
So that's it. I hope you enjoyed the video. I hope you have understood everything. If you have any doubt, then do mention in the comment section. Thank you.